सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सबने बहुत सुना होगा, लेकिन नॉट एवरीबडी टेक्स अप दिस जर्नी. क्यों? In this video, I'm going to talk about what does self-transformation journey entail. I'm going to talk from my experience and why don't people take it up, and what does it have in store. If you take it up, what does it hold for you? क्यों ज़रूरी है ये? कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है ये रोड अगर आप लेते हैं. It leads you to experiencing that happiness and peace of mind. The question is, do you want to choose to take it? Hi, I'm Aastha Tatia, daughter of two rock-solid pillars, mother to a lovely daughter, wife of a humor king, an engineer, MBA, corporate executive turned anchor person, now a happiness coach, helping leaders become the most sought after leaders by having deep connects and meaningful relationships in their organizations. Do hit the like button if you find this video purposeful, and also subscribe to the YouTube channel. When we talk about self-transformation, तो हर कोई इस पाथ पर नहीं है, obviously, for a couple of reasons. I think one is the whole conditioning that we have. We are so fixated with things that we can see, the changes that we can see. जो हमको दिखता है, जो चेंज नजर आता है, हमें लगता है हाँ यहाँ वाकई में कुछ हो रहा है. तो अगर मैं जिम जा रही हूँ, वेट लूज कर रही हूँ, वेइंग स्केल पर वो कम होता दिख रहा है या मेजरमेंट्स कम दिख रहे हैं, yes, change is happening. That is transformation from these many kilos to this, maybe. But कुछ ऐसा जो मुझे नजर नहीं आ रहा है, जो सिर्फ महसूस हो सकता है जब हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, वो नजर नहीं आएगा किसी भी इंडिविजुअल को, बाहर से देखने वाले को, राइट? बट मेरे वे ऑफ बीइंग में, मेरी जिंदगी में मैं जो महसूस कर रही हूँ, जो यहाँ है, वहाँ आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे उसे. इट्स एट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. एंड सिंस हम इतने फिक्सेटेड हैं, सिंस हमारी कंडीशनिंग ये है, तो हमें लगता है ये तो कैसे पता चलेगा, ये तो सब बड़ा हवा में है. Who will really go and spend on something like this? I've had coaches, or rather I would say people, tell me that, I do understand that it's important and I am in trouble, but who would spend XYZ amount on a happiness program or happiness journey, right? So still that, agar conceptually मैं बात करूँ, people are not really convinced, or I would say they're not really in sync with the whole concept. Having said that, when you get on this journey, right, couple of things which are very, very important and which I have realized have worked for me is the first thing, like any other journey, किसी भी journey पर आप हैं, commitment, discipline, persistence, ये बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि जो जैसे होना है, जब होना है, वो करें. It actually needs crazy commitment. कमिटमेंट फॉर योर सेल्फ कि मुझे करना है. और क्यों मैं परसिस्टेंस की बात कर रही हूँ, क्यों कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, पहला तो मुझे बाहर कुछ नजर आ नहीं रहा है. दूसरा, माई ब्रेन विल कीप टेकिंग मी बैक टू माई ओल्ड वेज, माई ओल्ड बिलीव्स. मैं नए की तरफ बढ़ रही हूँ, उसको ट्राई कर रही हूँ, तो एक दिन ऐसा लगेगा, वाओ, अमेजिंग, व्हाट एन एक्सपीरियंस. और दूसरे दिन मैं वापस अपने पुराने बिलीफ में होंगी. मेरे जो पुराने एक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं, वो भी शायद सामने आएंगे. मेरे इंटरैक्शंस लोगों के साथ में वो होंगे. बिकॉज अंडरस्टैंड, हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं. तो अभी तो मसल बिल्ड होनी शुरू हुई है, तो वो ट्रिगर्स आएंगे और मुझे लगेगा अरे ये तो होता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो काम कर लूंगी, पर रहना तो मुझे इन्हीं लोगों के बीच में है. हाउ विल इट वर्क?
And that's where persistence is very, very, very important. Do not think of quitting. Don't, and that, because that's where I see people quit. Don't. Just go on with it because you don't know what's in store right now. The very, very important thing is जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, it's a journey of एक एक परत जैसे खुलती जाती है ना, एक एक लेयर आप शेड करते जाएंगे. A layer of maybe your beliefs, limiting beliefs, your conditioning, जो conditioning, जो beliefs आपको रोक रहे हैं, barrier बने हुए हैं आपका better version होने में, उनको आप छोड़ते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे. और उसका वो एक प्रोसेस है, पर जैसे जैसे उसे छोड़ेंगे आपका नया वर्जन सामने आएगा. हर लेयर पे एक नया वर्जन है, फिर अगली लेयर छोड़ेंगे, फिर एक बेटर वर्जन है. और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एक नए वर्जन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके साथ आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स, आपके पर्सपेक्टिव्स, आपके बिलीव्स, ये सब भी बदलेंगे. बहुत सारे लोग उस जर्नी में पीछे छूट जाएंगे. आप देखेंगे कि आपके बिहेवियर्स बदल जाएंगे. लोग कहेंगे कि तुम बड़ी एरोगेंट हो गई है, ये आजकल ये बात नहीं करती है, या इसका तरीका बदल गया. जस्ट एन एग्जाम्पल, नॉट दैट there'll be different ways, but only you know what you're going through internally. That's going to happen. Don't get bogged down by that. Because हम इतने conditioned हैं to fit in, to be a part of the society, to get that validation. Oh, she's such a nice girl. और वहाँ पर कोई कह रहा है आजकल ये बात ही नहीं करती है. Because you know that suddenly, not suddenly, you know through, because of all that work that you're doing on yourself, your interests, your likes, dislikes, what now is in sync with your core is all changing. And when that happens and that newer version comes out, at every step you are heading closer to experiencing that happiness and peace. So उस वक्त बहुत जरूरी है persist. और वो कब होगा, कैसे होगा? When you are mindful, you are aware of what is happening. जब जब अपने उस पुराने जोन में जाओगे, जब जब पुराने बिलीव्स में जा रहे हो, all you need to do is just stay aware. क्या हो रहा है मेरे साथ, और आगे बढ़ते चले जाओ. Don't quit. वापस पीछे जा रहे हो, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ोगे. But I would say so many instances where I start doubting. I'm like, will I be able to do it? A lot of questioning and blaming myself. It happens. But one thing I'm clear about is that it's a journey that I have chosen, and I'm not leaving it for anything. Massive changes that I experience within and in my way of being, in my way of thinking, there is so much of peace, immense peace. Lot of things. So I won't be able to talk about that much in at length, maybe in some other video. But massive. I can tell you, it is every bit worth it. Every bit worth it, without exception. Right? And what keeps you going is when you're aware what is happening, what is happening. What has kept me going is that trust in the unknown. Because मुझे नहीं पता मैं किस ओर बढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये एम है, यहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है नहीं पता है. उस जर्नी पे हूँ, एक बेटर वर्जन निकलता जा रहा है, आ रहा है, लेकिन there's no destination which I have in my mind, and therefore it is all uncertain, it is unknown, I would say. So having that trust in the unknown, that whatever is there is phenomenal, that trust keeps me going. And that trust is very, very, very essential. So all that commitment, that discipline, that persistence, even when you're pulled back, when you take 2 steps back, but then again 1 step forward, you've got to persist. And being mindful, being aware of what is happening, just keep observing. That's all. And keep moving. And having that trust in yourself and trust in the unknown. And I can tell you,
there are so many miracles that I have already experienced. I actually call them miracles because I had never ever imagined in my life that's how I'm going to experience. Yes, there's a huge long road ahead, lots to do, but हर बार जब आप एक लेयर को शेड करके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो खुशी मिलती है जब उस बैरियर को पार करते हो, उसके बियॉन्ड जाते हो, I can't put it in words. You've got to experience it. So, if you really want to experience happiness, peace, I think it's a continuous journey of self transformation that you must take on. I think everybody must do that if you want to experience that authentic happiness. And yes, I think um, that's the key to really experiencing what you desire. So I hope this gives you some thoughts on what you really want to do. It's a choice that you have to make. And yes, it's a journey, not of a week, month, or a year. It's a journey, like no definite period, but yes, worth every bit. So go ahead and make your choice and do share. I'll see you soon in the next video. Take care. Bye bye.